what particularly is ML, कि ML क्या है, हम बात तो कर रहे हैं, एंड मोटिवेशन ये है कि लाइक हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम लाइक ह्यूमंस. ओके, ठीक है. सो बेसिक टास्क पर आते हैं. सो लाइक ऑल यू गाइस हैव डन प्रोग्रामिंग, वेदर इन सी पाइथन, किसी ना किसी लैंग्वेज में यू वुड हैव डन इट. सो टेकिंग दैट एग्जांपल, कंसिडर कि तुम्हें लिखना था हाउ टू रिवर्स एन एरे. Okay, so let's take that example. So in Python, how will you write? You will write def reverse underscore array. Then you will pass the array to it, and then return array को करोगे and basic indexing -1. Okay, so ये basic, like this is the basic function for reversing an array. Like similarly, you can write it in C or something. So if you think like इसी एग्जाम्पल से वी ट्राई टू लर्न दैट हाउ ह्यूमंस थिंक. सो फर्स्ट वी स्टडी द प्रॉब्लम, लाइक वी अंडरस्टैंड दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम है इन विच वी नीड टू डू रिवर्स द एरे. देन उसके बेसिस पर हम रूल्स लिखते हैं. जैसे सी में यू वुड टेक अ लूप एंड फिर एन माइनस आई करके उसको फिर नए एरे में स्टोर करोगे एंड देन यू विल रिटर्न दैट एरे. So that is the basic thing. And then you have certain test cases जिस पर तुम उनको evaluate करते हो, you analyze the errors and reiteration चलता रहता है. Basically the improvement task. But there are certain problems. Like for example, अगर you are given this image, okay, screen visible है ना? हाँ भाई. Okay. So you can see that there are various person, car, backpack, like these kind of things are there. जब तुम छोटे थे, like your parents must have told कि हाँ this is yellow color, this is green color, this is car, this is how you ride a cycle. So what you have got some kind of response from the outside environment. Consider कि एक like तुम एक entity हो and बाकी सब एक environment है in which you are living. Okay, so you got this particular कि हाँ ये person है, ये car है. So my question to you is कि हम तो ये समझ गए कि हाँ ये पर्सन है, ये कार है, बट हाउ विल यू टीच दिस टू अ मशीन? बिकॉज लाइक तुम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हाँ जिसके हाथ है, नाक है, लाइक वो एक इंसान है, जिसमें व्हील्स है, एक बॉडी है, मेटल बॉडी है, उसमें हेडलाइट्स है, वो एक कार है. यू कांट जस्ट डायरेक्टली से इट. You need to define these things in a mathematical format so that machines understand it. Because machine क्या समझता है? Only bits, और bits क्या है? Numbers. Okay, so we need to transform this problem into a mathematical problem, है ना? एंड अगर मैं तुम्हें बोलूँ सेम एग्जांपल जो मैंने सेशन में दिया था पहले कि कैन यू आइडेंटिफाई, अगर एक फेस की इमेज है या ये इमेज ही है, लाइक कि बेस्ड ऑन सीइंग दिस कार, क्या तुम कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन जो बताए कि ये कार ही है, यूजिंग दिस एनालॉजी, कि ह्यूमंस कैसे थिंक करते हैं और हमारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं. ओके, कैन समवन टेल दिस? नो वन. ओके, सो इसी में हम करेंगे जैसे लाइक हाउ ऋषि रंजन सर से दिस. अगर तुम देखो एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लाके दे दो कि लाइक विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, सिंपल तुम्हारे लॉजिक एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स से, कि एक इमेज में डिटेक्ट कर ले कि ये कार है, तो आई वुड मेक श्योर दैट यू गेट अ ब्लैंक चेक which is signed by IIT Bhilai, and you can enter the amount whichever you want. Okay, so this is my challenge to you. And अगर नहीं कर पाए तो you need to learn this ML. Okay, so these are those particular tasks. Like आंसर में बताता हूँ, ये based on human thinking and intuition possible नहीं है. Okay, similarly coming ये contents को skip करते हैं. So I said that from the environment you get some response. Like in our case, it was
दैट कि एक इमेज था, एक कंसिडर ये एक इमेज है, then we pass into some kind of black box model, which can be a statistical model or deep learning based model, and वो कुछ आउटपुट करता है। सिमिलरली जैसे तुम्हारे पास एक रिवर्स का फंक्शन था, मान लो ये एक फंक्शन है, तुमने इसे कुछ इनपुट दिया, इट गेव यू सम आउटपुट, एंड जो ये सेट होता है कि इनपुट और आउटपुट का, है ना, बेसिक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यू हैव द इनपुट, ये सीपी का बात है, एंड लॉजिक, and then from that you generate the output. But in case of ML, you have the input and output, and using those you need to find the logic. Okay. So basically जो हमारा टास्क था, ये वाला ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लाइक वी कॉल इट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, है ना। सो इसमें क्या होता है, जैसे इसी का मैं एग्जांपल लूं, व्हाट वी हैव इज ये इमेज जो है पूरी, जैसे ये पिंक येलो रेड बॉक्सेस को भूल जाओ, कंसीडर कि ये है ही नहीं, है ना। तुम्हारे पास सिंपल इमेज जैसे तुम कैमरा से लेते हो वो इमेज है। ओके, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, क्या आ गया। तो ये इमेज थी तुम्हारे पास, एंड एज वी टॉक प्रीवियसली कि हमारे पास इसका आउटपुट्स हो गए, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है पर्सन, है ना। देन वन थिंग, इसमें क्या है, टू डिफाइन दिस बाउंडिंग बॉक्स यू नीड सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन इमेजेस। तो जनरली ये 0 0 होता है, एंड उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। क्या ये ह्यूमन एनोटेशन मिलता है इनिशियली जब हमारे पास डेटा होता है, एंड उसके बेसिस पर वी ट्रेन द मॉडल। सो वी हैड दिस इमेज, एंड मान लो एक था पर्सन, देन उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देयर वाज बैकपैक, देन उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एंड और क्या था, कार, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, सो एक, तुम जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में एक्स कॉमा वाई एक टपल होता है, कंसिडर ये भी एक टपल है, जिसमें एक्स ये रिप्रेजेंट करता है, वाई ये रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एक्स इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है। सो अब तुम्हारे पास इनपुट आउटपुट आ गया, यू नीड टू फाइंड दैट मॉडल, okay, the logic which governs this transformation. So to get that logic, like we will study some various algorithms, like coming in this session only we will tell about various domains and उसमें क्या क्या models होते हैं। So we will leave the model thing to that part, then we have data driven solutions। we told कि कब data driven solutions चाहिए होता है, जब हम logic को define नहीं कर सकते। This is similarly, what rules would you answer to that there is a person in the image? Okay, so then same thing comes, how we can explain it to computer। Similarly कि हम उनको provide करेंगे the input and the output, and there will be some algorithm which will try to find out the function between them। कि हम जैसे फंक्शन से, फंक्शन समझते हो सब क्या होता है, लेट से तुम्हारा एक लीनियर फंक्शन ही था, जैसे y इक्वल्स टू wx+b, बेसिक सिंपल फंक्शन जो होता है, लाइक इसको हम लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन में। एंड क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पास लाइक सर्टेन पॉइंट्स है, जैसे ये प्राइस है ऑफ हाउस की बात करते हैं, एंड ये है एरिया। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो ये प्राइस जनरली बढ़ेगी। लाइक देर आर सर्टेन केसेस, एज केसेस की जहाँ एरिया ज्यादा होता है, वो वहां पे प्राइस भी कम होती है, बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स, लोकेशन एंड
other factors also play, but for this example consider this. तो ये जो ट्रेंड है, जैसे ये जो ट्रेंड ऐसे जा रहा है, इफ वी कैन लर्न ये जो लाइन है, तो ये लाइन ऐसे ही रिप्रेजेंट होगी y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो इस लाइन में क्या होता है, वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स कि इसकी स्लोप क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है। सो लर्निंग दैट, लाइक वी कैन ट्रांसफॉर्म कि ये एक लर्निंग टास्क है, एंड इसके लिए लाइक वी हैव अ सर्टेन व्हाट वी कैन से एल्गोरिथम्स, लाइक इसमें से एक लीनियर रिग्रेशन है। लाइक अगर लीनियर लाइन है, देयर कैन बी सर्टेन केसेस जहां तुम्हारा कुछ ऐसा हो, वी हैव पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, उसमें पावर्स बढ़ जाती है। देन लाइक वी हैव कंसिडर ओनली वन थिंग कि प्राइस जिस पर डिपेंड कर रहा है, एंड दिस इज दिस जो एरिया है, वी कॉल इट अ फीचर। फीचर आर द थिंग्स विच गवर्न द आर टारगेट आउटपुट। ओके, सो ये होता है फीचर। एंड क्या है, इस केस में भी आप टेकन कि हमारे पास बस एक ही फीचर है विच इज एरिया, बट देयर कैन बी क्या प्राइस, जैसे एरिया इज वन फीचर, देयर कैन बी लोकेशन, फिर देयर कैन बी नंबर ऑफ बेडरूम्स, माइंड माइल, लाइक हैंड राइटिंग। ठीक है, सो ये सर्टेन थिंग्स होती है, एंड इसके बेसिस पर योर टारगेट आउटपुट जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती है। लाइक तुमने इसको पढ़ा होगा कि दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट फीचर्स, एंड ये जिसका फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट फीचर। सो एक केस स्टडी लेते हैं, लाइक ईमेल क्लासिफिकेशन। लाइक जीमेल तो लाइक यू ऑल मस्ट बी यूजिंग। सो क्या होता है, देयर आर सर्टेन ईमेल्स, लाइक कि वो तुम्हें कुछ बेचना चाहेगी या समथिंग लाइक दैट। सो लाइक क्या है, इफ यू टेक दिस प्रॉब्लम एज पर सीपी, लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, तुम एक लॉजिक बिल्ड करना चाहोगे कि लाइक हाँ, दीज सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स आर देयर, तो ये एक स्पैम आ जाए। सो आई हैव अ लिस्ट हियर कि जैसे लाइक ये सर्टेन वर्ड्स है, जैसे एक्ट इमीडिएटली, अप्लाई नाउ। तो ये क्या अर्जेंसी दिखाता है, लाइक इट इज लेबल्ड ऑल्सो कि कौन सी कैटेगरी में है। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव शेडी, कलेक्ट चाइल्ड स्पोर्ट। लाइक व्हाट जनरल टर्म विच इज गिवन टू दिस इज डार्क पैटर्न्स, लाइक ये वेबसाइट्स में भी यूज होता है। एंड सो दिस इज द बेसिक। एंड सीपी में यू विल से कि जैसे कोई भी एक वर्ड उठा लेते हैं, जैसे ट्रायल, जैसे अर्जेंट उठा लेते हैं। सो यूजिंग सम थिंग, अगर इन द टेक्स्ट यू कैन फाइंड कि अगर अर्जेंट है, अर्जेंट मिल गया, तो क्लासिफाई दिस एज स्पैम, और अगर नहीं मिला तो नॉन स्पैम। ओके, बट जीमेल का एक्सेस सबके पास है ना। जो भी ईमेल भेज रहा है उसको पता चल गया कि योर मॉडल, हाँ ये अर्जेंट को देख के स्पैम क्लासिफाई करता है। तो वो क्या करेगा, इस अर्जेंट की जगह कोई दूसरा वर्ड कर देगा इमीडिएटली, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अब इस केस में योर एल्गोरिथम फेल्ड, क्योंकि वो सिर्फ अर्जेंट के बेसिस पे कर रहा था, है ना। सो सिंपली ऐसे लॉजिक जो हम क्या है, अभी सिर्फ ये मॉडल जो है सीपी बेस्ड मॉडल, व्हाट इट डज इज ये सिर्फ वर्ड्स फाइंड कर रहा है। लाइक इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कि ये जो मेल है व्हाट इट कन्वेज। लाइक लाइक इफ यू यूज द domain specific term, it is called contextual meaning। कि like for example there are certain tasks कि एक particular text जो है, like it can be a positive, like positive emotions convey कर रहा है, negative emotions convey कर रहा है, या no emotions। like इस particular task को we call it as sentiment analysis। okay, but तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि how the words in a sentence are linked, and what how they are linked and what each word conveys, because क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल रन है। अब एक रन का एग्जांपल हो सकता है भागने वाला, रनिंग वाला। एक रन का एग्जांपल होता है कि हमारा कंप्यूटर चल रहा है या कोई प्रोसेस रन हो रहा है।
You understand that इन दोनों में there is a certain difference, but ये मीनिंग अगर हमारे पास इस मॉडल अंडरस्टैंड नहीं करेगा देन इट कांट टेक अ गुड डिसीजन. सो वी नीड टू मेक श्योर कि ये एक जो एक पर्टिकुलर वर्ड है, फॉर व्हाट रीजन इट इज बीइंग यूज्ड. ये भागने वाले रनिंग के लिए यूज हो रहा है या प्रोसेस वाले रनिंग के लिए यूज हो रहा है. ओके. सो ये सब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लर्न करने के लिए लाइक वी नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ मॉडल जो ये मीनिंग्स लर्न करे. एंड अगर हम अपने इंट्यूशन से देखें कि लाइक क्या हम ऐसे एक हम ग्रामर तो लर्न कर लेते हैं बट वो ग्रामर कैसे हम एक मशीन को सिखाए, लाइक दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क. उसी केस में जब हम एक पर्टिकुलर लॉजिक खुद डेवलप नहीं कर सकते टू टेल द मशीन, लाइक व्हाट वी नीड एक एमएल मॉडल जो एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन या फंक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करता है बिटवीन इनपुट एंड सम आउटपुट. ओके. ठीक है. तो इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, हमारी मेल हो जाएगी एंड फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, स्पैम या नॉन स्पैम. ओके. सेम एक्स वाई फंक्शन. सो यू कैन सी कि हमारा इनपुट पिछले केस में क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात कर रहे थे, सॉरी यहाँ नहीं, वो उस पे यहाँ पर वी हैड इमेज. एंड इस केस में क्या हो गया, इट बिकम्स अ टेक्स्ट. सो क्या है, ये इनपुट चेंज होता है. सो देन इसी के बेसिस पे वी कम टू डिफरेंट डोमेन्स विच वी विल डिस्कस शॉर्टली. ओके. सो लाइक let's move forward. Like I would request Hemant Bhaiya to continue from here. हम्म तो ठीक है गाइस. तो टिल नाउ हमने लाइक मशीन लर्निंग को लाइक थोड़ा लाइक इंट्यूशन वो सब समझ लिया. तो इट्स बेसिकली लाइक जो हम लाइक अगर हमारे पास लाइक लॉट्स ऑफ डेटा है जिससे हम सीख सकते हैं कि लाइक आउटपुट कैसे देना है, लाइक ऑल सच थिंग्स लाइक बेसिकली कम अंडर मशीन लर्निंग. बट ऑफ कोर्स लाइक मशीन लर्निंग इज लाइक जस्ट लाइक इट्स अ सबसेट ऑफ एआई. ए का क्या है ये, लाइक ए का गोल ये है कि बेसिकली ह्यूमन का इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना, राइट. एंड ह्यूमन और मशीन का लाइक मेन फर्क क्या है, इट इज लाइक लर्निंग, राइट. लर्निंग, वो जो लर्निंग का पार्ट है लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस डेटा या एक्सपीरियंस, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय एमएल. बट however that is not the only part about human intelligence. Another thing which we are like quite good is taking intelligent decisions, right. Like even life is itself a game. We are like faced with a lot of situations, and we also have to follow lots of rules and regulations, and we are like given a lot of data depending on which like every day we need to take lots of decisions, right. And even live life, like even if you take a simple game like chess, right, there are lots of rules to follow. You can't move every piece, like however you want. And there are some like strategies and gambits. Like अगर पोजीशन ऐसा है तो ऐसा करना ही पड़ेगा. That is the optimal move. And sometimes the move you don't know like which is the optimal move and which is like the good move. Some moves are good for short term. Some moves are good for long term. So there are lots of nuances and all. So this kinds of decision making mostly comes under artificial intelligence, right? Where you are given with a certain data and you have to take a decision or a move. And another example is that like take a game like GTA Vice City, for example. Like when you're playing a mission, there are obviously lots of goons and thugs, like who are the enemy AI. Like if you go into their viewpoint now, they will try to kill you. Now they also know they are not made using lots of data and experience like in machine learning. They are programmed using simple rules and algorithms. Just like computative programming algorithms. उनका रूल क्या हो सकती है? Like if you come under like their viewpoint and stay for more than 5 seconds, then they'll notice you and then start to shoot at you. Right? For first 5-10 seconds, they might shoot you with let's say 50% accuracy. And then as you stand there, the accuracy keeps on increasing and eventually they'll shoot you. So उस तरह के simple rules होते हैं.
उसके लिए. So that is the thing. So those kinds of systems where we don't necessarily require learning, but we need to take intelligent decisions. Basically, all this comes under artificial intelligence. And if you couple that with learning also, you can make even more intelligent like systems, like even more intelligent AI. So that's one advantage. So the machine learning maybe now there are again lots of fields. Like this is a field where research has been going on since the 1950s and 60s, both AI as well as ML. ML के लिए ना there are lots of algorithms and models. Like most of the algorithms initially they're more statistics based, like linear regression, support vector machines, to name a few. उनके लिए ना there is a certain equations and all, like curve fitting, basically using which you'll learn data. Like एक 2D graph है, like how Bhavik said, you need to fit a line. That is called as linear regression. That also comes under like machine learning. Now 1970s में क्या हुआ कि we basically observed like wanted to simulate how the human brain thinks exactly. So for that what we did, obviously brain का fundamental part क्या है? Neurons, right? So हमने भी क्या किया? We tried to simulate neurons also. So we created a simple model of a neuron and then created neural networks, which is initially called as perceptron. Now, since then, we have continuously developed those, and right now, some of the best algorithms in ML are neural networks. So, and even neural networks से like बहुत कुछ like कर सकते हैं, like वो vision में डाल सकते हैं या speech में डाल सकते हैं, like even like text-based systems like ChatGPT में. Now, all these things which utilize neural networks come under deep learning, right? So that is this. And everything like all the algorithms which came before neural networks, they come under classical machine learning, which is everything except like deep learning. So, okay. So, okay, let's get back to ML. ML में like you can broadly classify like domains of ML. Like ML में क्या होती है? Okay, let me just get a pointer. So yeah, so ML में क्या होती है? There is basically some model or an algorithm which takes input of a certain format of data and then produces an output, right? The input can be of any format. It can be text, it can be a image, it can be a video, or it can also be an audio. So depending on the type of input, it can either be computer vision, NLP, speech recognition, ऐसा कुछ. And the output can be anything. It can be an inference, it can be a prediction, or it can be a label, like that. Now, this type of input, which can be either an image or a text, is called a modality in domain specific terms. Right? अगर वो इमेज है इनपुट का वो सीवी में आएगा. अगर इनपुट का फॉर्मेट टेक्स्ट है तो एनएलपी में आएगा. अगर इनपुट का फॉर्मेट ऑडियो है तो स्पीच रिकग्निशन के अंडर आएगा. अगर इनपुट का फॉर्मेट एक ग्राफ है, like the graph of a stock market and all such, and you need to predict the next price of the stock, that comes under time series analytics. So let's discuss this in more depth. Okay, let's start with computer vision. So इसमें क्या होती है basically? Input is either an image or a video format, right? Now, obviously, computer vision is also like initially started out as a image processing and then gradually, used ML techniques like neural networks, CNNs and all. And that's how the computer vision field is born. तो इससे क्या कर सकते हैं? इससे like image का data extract कर सकते हैं. And depending on the type of tasks which we do on an image, we can like classify those tasks. Like let's say classification. Classification task क्या है? So given an image, अगर वो एक dog है, then we need to label it as a dog. If it's an image of a cat, we need to label it as a cat. बस वही. We will assume like image में एक ही object है and object का वो label क्या होता है वो label डालना चाहिए. This is called as a classification task. Right? Now, obviously, एक image में एक object तो like rarely होता है. Mostly like it's as given here, we have multiple objects. So in these types of cases, we can use object detection. डिटेक्शन में क्या होता है? देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज एंड एक एक ऑब्जेक्ट को ना तुम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हो, लाइक लोकलाइज कर लेते हो इमेज में एग्जैक्टली किधर है वो ऑब्जेक्ट.
लोकलाइज करके एक बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करके ना, they will give it a label like it's a car, or if you look here it's a traffic light, or if you look here it's a truck, like that. So this is called as object detection. Now there are also multiple other tasks like segmentation and all. And the latest one is obviously image generation. Everyone must have heard about DALI, right? Even like segment which came like last year and we hosted a session. उसमें क्या होता है? You will give a like certain prompt using which it generates image, right? So that also like comes under computer vision. Even though the input like there is a text, so like it comes under computer vision also. So popular Gen AI tools include Midjourney, which is an image generator, and Sora. This is again latest one by OpenAI. This can generate videos also, right? Now, one of the major ML algorithms which is used in the field of computer vision are CNNs, called as convolutional neural networks. So this is it about CNNs. ठीक है? Now let's come to natural language processing. इसमें क्या होता है? The input of the data, like input format and the modality, it is basically text. An output can also be, it can be text, a label, a prediction, or just a number. Output कुछ भी हो सकता है. It can even be an image. So इसमें क्या होता है? Given the text ना, we have a lot of meaning as Bhavik said. वो context भी समझना पड़ेगा and depending on that we need to appropriately analyze it, right? अगर Twitter में जाओ, let's say anyone can write anything on Twitter. Like how do you make sure that every tweet is not abusive or hateful, or it is very toxic in nature, right? Those tweets which are not following community guidelines. And even no matter how many humans you keep, na, it's not a very easy task. In fact, it's impossible because there are billions of tweets generated per day, and you simply can't keep that many humans to check for each and every tweet continuously. So you need to automate it basically. तो उसमें क्या होता है? Given a certain tweet, you need to analyze वो क्या है, उसका like sentiment क्या है, like emotion क्या है उसमें. Is it hateful? Is it joyful? Is it sad? Is it happy? And all. And if it's very negative, then we need to flag it, or we need to like simply block it. So that comes under sentiment analysis. And there is another thing also called as named entity recognition and then question answering. And this question answering ना, this is basically chat GPT and chatbots. जो भी chatbots करते हैं, इसमें you'll basically given a question or a prompt, which is again text, and the output is also text, where it will try to answer it like chat GPT. Hmm? Even Google also does this. So this comes under generative AI because it is generating the text. Now popular examples of it is ChatGPT and Llama. दोनों के दोनों chatbots हैं, but the difference is ChatGPT is closed source, Llama is open source. You can run a Llama model on your laptop locally. There is a thing. तो इसमें क्या है? ML का क्या algorithms use होता है? They are transformers and LLMs. Right. So these are the like transformers are the ML architectures or ML algorithms, which is heavily used in NLP. And this architecture is present in both ChatGPT as well as Llama. So this is natural language processing. And obviously speech recognition. So you guys must have listened to, the music, generated music, like Modi singing a Shreya Ghoshal song, or a simple like Instagram में वो देखते रहेगा. So those kinds of things like voice change करना और वॉइस को लाइक एक ऑर्डर देख के वो वॉइस को आइडेंटिफाई करना, changing. And even हाँ, speech to text, you can basically use Google Assistant, right? Like Alexa Siri, you will say hey Siri. वो पहले क्या करता है, जो भी ऑर्डर है ना, it will first convert it to text, and text में convert करने के बाद then it will pass the text to some other algorithm like a chatbot. So, so that's how it works. Or you can even say text to speech, like many of the popular like YouTube का videos, वो भी text to speech से कर लेते हैं लोग. And most of us like can't even find the difference between like अगर ये AI generated voice है like text to speech है या original voice है, like it's that good right now. So yeah, again Alexa and Siri are the like good examples, and again works closely with NLP. And also like ना ML में जो भी tasks है, like you can really like
वो उतना भी कॉमन नहीं है टू सेग्रीगेट टास्क टू एनी सिंगल फील्ड। लाइक एक टास्क है, वो मोस्टली सिर्फ कंप्यूटर विजन या सिर्फ एनएलपी या सिर्फ स्पीच रिकग्निशन में नहीं होता है। ऑफन टाइम्स ना वी यूज मल्टीपल मोडालिटीज। लाइक इनपुट एक इमेज हो सकता है, आउटपुट टेक्स्ट हो सकता है, और इनपुट एक टेक्स्ट हो सकता है, आउटपुट इमेज हो सकता है, लाइक डाली। और इनपुट एक टेक्स्ट हो सकता है, आउटपुट एक ऑडियो हो सकता है। तो दिस इंक्लूड्स बोथ एनएलपी एज वेल एज स्पीच रिकग्निशन। दोनों का एल्गोरिथम्स हम मिक्स करके लाइक क्रिएट करते हैं इसको। So these kinds of algorithms are called as multimodal algorithms. It's like multimodal models. Modality अलग अलग. Now can I conclude that so, yeah. Which one is more effective? So of course, अब तक लाइक हमने क्या बात किया, एक डेटा है, डेटा से हम कुछ एनालिसिस से इन्फरेंस कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं बेसिकली। तो दैट्स नॉट द ओनली थिंग, राइट? लेट्स से यू आर प्लेइंग अ गेम लाइक सुपर मारियो। तो उसमें क्या है, यू आर बेसिकली प्लेयर who is situated in a virtual world. उस वर्ल्ड में there are certain set of objects and rules and regulations, right? Rules क्या है? You need to finish the first level in say like 300 seconds. वो time limit भी होता है सुपर मारियो के लिए। And there are some objects like there is a brick. If you hit a brick now, it will break. But if you hit a mystery box, you will get a reward like a coin or a power up. And if you touch an enemy, you will die. So there are rewards and consequences for each and every action. And you can't do everything. You can only do certain set of actions. In Super Mario, you can only move left, right, jump, and press action button. Those are the only four moves which you can do. But how you use those moves and interact with the objects in the game defines like how will your experience be, right? And there is also a goal. Goal क्या होता है? Going to the castle and saving the princess. So wait, in these types of like cases where there is a certain virtual world with objects and you have a certain player or agent. Agent को क्या करना है? He need to make certain moves, or you can also call it certain decisions, right? वो decisions ले सकता है, and each of his decisions will have a consequence. It can either take him closer to his goal or away from it. Now, what the agent needs to do? It needs to find the most optimal way to complete the game successfully with maximum number of points or score, you can say. So, game का ये है. This is a very like classical example. So, that thing comes under reinforcement learning. इसमें ना there is no certain data कि you have a list of images and सारे images का like output label है तो train कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता. Because in these steps ना like you can't even do that. Even if you like say take a screenshot of the screen at every moment and label it like हाँ अगर इमेज ऐसा है तो ऑप्टिमल मूव ये है, तुझे लेफ्ट जाना है, अगर ये ऐसा है तो ऊपर जाना है, then it just becomes too complex. वो बढ़ता ही जाएगा complexity में, and it is not feasible to train, right? So इस तरह का systems का model reinforcement learning करता है basically. So this is a bit different from ML in this manner. एक environment है जिसमें like there are objects, and on interacting with them you'll have a certain consequences and feedback and rewards, and based on all that you need to eventually learn to reach your goal. So that comes under this. So obviously popular examples are obviously like game ka AI, like chess AI है या tic tac toe AI, or even super mario ka AI. Those comes under this. Initially this was how reinforcement learning ka field like it has been developed. Now, it is not limited to just games. You can like, extrapolate that to some real life use cases like Netflix का recommended systems. इसमें क्या होता है? The agent will recommend you a certain movie, right? And depending on that movie, if you can like it or not, that will be its feedback. Like तुम feedback दोगे, कुछ rating ऐसा कुछ. And depending on that rating, and by continuously suggesting you content, eventually it learns कि तुम्हारा taste क्या है. Like what content do you prefer? What movies do you prefer? And it over time eventually start suggesting the content which you actually like. So that is called as recommender system. That is also an application of RL. जो insta में like you will get like post का recommendation, right? Eventually the only the kind of post you like and you stay a lot like watch a lot of times, those types of posts are they occur more frequently later, like that. Or even YouTube का algorithm, all these use reinforcement learning. तो इसमें ना
Q learning and policy guidance होते हैं जो which are the ML algorithms which are used in reinforcement learning. And again obviously game का है is self driving cars. Even self driving cars का भी है. हम क्या करते हैं, एक virtual road और city बना लेते हैं कंप्यूटर में. We'll make a model of the car and just train a robot in that. There it can hit anyone, it can crash and कुछ नहीं होता है consequences. I mean होता है but वो real world में feel नहीं होता है. So virtual world में वो train होता है and then we'll dump that algorithm into real life car जो भी system है. And there it can drive very efficiently, sometimes much better than humans. So that's how self-driving cars work. There is also application of reinforcement learning. And let's come to the time series analytics. So इसका popular application is in stock markets and weather prediction, right? इसमें input data का format is basically a 2D graph. Y-axis is a time, any time unit. It can be month, second, year, anything. And y-axis is basically any value. It can be like each unit can be in rupees. It can be the amount of rainfall. It can be like moisture, temperature, anything. Any 2D graph na, and you need to predict it based on the patterns. Then that is a task of time series analytics algorithms. If you saw this, hmm, now this data, which is basically stock market data of trade, and depending on the month, you can see that it follows a pattern. It initially dips, then it goes has a peak, and then has another second peak, and then dips, and then two peaks, and then dip, and all the while it is gradually increasing, right? So, इसका next point कहाँ हो सकता है? It is probably dip, right? It will probably be here, somewhere here. So, depending on the previous pattern, you need to predict where the next data point can be. Like, so इस तरह के cases में ना, we can use this time series algorithms. Some of the like most simple example is moving average. Moving average में क्या होता है? तुम बस इन दोनों का average ले लेते हो past 4 का वो डाल देते हो. वो it will be somewhere here. It will be okay, but not too accurate. And then there are some advanced models like auto-regressive models like ARMA and ARIMA. And then some neural network based models like or some similar models like RNN and LSTMs. So these are the ML algorithms which are used in this field. So इसका mainly financial forecasting and weather prediction है. So these like cover the most like basic divisions of machine learning. So like this like completes like the introduction to ML. And if you are interested to learn more, like you can actually watch this 100 Days of ML by Campus X. हमने review किया and it's quite good. ये ना like it will cover like till classical machine learning. So तुम ये भी start कर सकते हो. So Like main good thing about this 100 days of annual playlist is that like it will start from the very basic. कि like what are features? कि like which I told you कि prices का जो होता है जैसे house price का वो number of rooms पे house size इन सब पे depend करता है. तो ये how you define in every context कि ये features कैसे define होते हैं, how these impact the dependent variable जो हमें चाहिए exactly, and how these are related. ये पूरा from the very basic scratch it will take you till the just before the neural networks part, like classical वाला जो statistical based है. Like is this covered completely in this playlist? Like if you want to like explore more like from our sessions, like you can definitely go and watch it out. So basically, this was the introductory session. In the next session, we'll be discussing the basics of Python for ML. Okay, then like I think this is all. Like so, thank you guys for joining. Till then, keep learning.